Hello everyone, welcome to prepguruu, the online platform for CUET. Now, in the previous two lectures, we have discussed about what literary terms means figure of speech, right? Today we will go further with literary terms, but now we will discuss the questions also, which are coming in your examinations and how to deal with these questions in terms of literary terms, right? So let's have a brief look over the previous devices, literary devices, क्योंकि आज मैं आप लोगों को questions दूंगा तो you have to recall the devices. Means if there are four options for any kind of phrase, statement or paragraph, then you have to pick that thing. Means sir simile ने क्या बताया था, metaphor में क्या बताया था, right? So in that manner you have to check your knowledge, right? So मैं जल्दी से आपको briefing दे देता हूँ. Suppose if I talk about the literary devices जो हम लोगों ने पढ़ी थी, the first one was on the basis of what? Comparison. Comparison के basis पर the first one was simile. Simile means what? When two dissimilar things are compared to show some similar traits with the help of what? Like or as. जिसमें like or as use होगा to show comparison, that would be the case of what? Simile. Second thing was what? Metaphor. Metaphor is a direct comparison, means we are attaching, or you can say we are comparing one thing with another thing. Suppose मैंने कहा life is a dream, तो life को सीधे dream से जोड़ दिया. But if I say life is like a dream, then it would be the case of what? Simile, right? So when you see like or as in terms of comparison, it would be case of what? Simile. But if you see a direct comparison without using the words like or as, then it would be the case of what? Metaphor, right? Now the third one is what? Personification. What is personification? If I talk about personification, base same hai. Base is what? Comparison. And if I talk about personification, giving human traits to non-humans. अब non-humans में animals भी आ सकते हैं, any other creature, natural elements, all other things, right? Now, if I say the flowers nodded, the flowers nodded means what? Nodded means what? Jhukna, bend, to bend. So it is what? It is an action. So it is action used by what? Human beings. But मैंने यहाँ flowers से उस action को show किया है. It is the case of what? Personification. Now, personification has two subparts, which is known as what? Apostrophe. Apostrophe. If I talk about apostrophe, then it would be what? The communication, or you can say the address kind of thing with non-humans. Means when we address or communicate with what? Non-humans, then it would be the case of what? Apostrophe. When we try to communicate, right? And pathetic fallacy is what? It is a form of what? Emotions. Emotions. When we show human emotions through non-living things or non-humans. Suppose if I say the angry sea, so the angry sea is what? An example of pathetic fallacy. Emotion. Angry is emotion, right? Now, in terms of difference between these three, personification, apostrophe, and pathetic fallacy, personification goes with what? Some kind of action. When you show action, human actions with non-humans, then it is a case of what? Personification. In case of apostrophe, when you try to communicate with non-living things, when you address non-living things, then it is what? It is the case of what? Apostrophe. The third one would be what? Pathetic fallacy. It is human emotions, right? Now, the second base was what? Association. Association means what? If one thing is attached with another thing. Suppose if we talk about metonymy, metonymy is very important literary device. Suppose if I talk about metonymy, metonymy, if we substitute one thing with another. जैसे मैंने बोला White House announced. The White House is what? It is a name of building. But White House की कोई भी activity, White House का announced मैं use कर रहा हूँ, and it might be the case of what? Metonymy. Why? Because White House referred to what? President of US, right? Now, see this. I enjoy reading Shakespeare. So means his plays. I enjoy reading his plays of Shakespeare, right? Now, synecdoche. Synecdoche is the same as metonymy, but synecdoche use the same thing, means part of the same thing, but metonymy use what? Different things. Suppose if I talk about synecdoche, synecdoche use what? It uses a small part to represent the whole thing, the whole big thing. Suppose if I say, I have bought a new pair of wheels. So wheels is representing what? The whole big part. That is what? Car, the whole car, right? Suppose if I talk about the police, one policeman, plastic,
Credit cards means I have so many plastic cards, means credit card, debit cards, right? Like this, right? Now, if I talk about another base is what? Based on sound per based जो literary device हम लोगों ने पढ़ी थी. In that case, the first one is very easy. It is called onomatopoeia. Onomatopoeia means what? Name of what? Sounds produced by different creatures. Different creatures. Am I audible to you? Am I audible to you or not? Say yes or no in the chat box. I'm audible. Okay. Now, if I talk about the next literary device in the base sound, then it would be what? It would be alliteration. Alliteration में मैंने आपको क्या बताया था? It might be what possible that students are picking up the alliteration kind of thing through the alphabets. Means if they see consonant letters repeated at the beginning portion, then it would be the case of what? Alliteration. Suppose if I say this one, which is repeated, seashells, S is repeated, W is repeated, B is repeated, N is repeated, but the main element by the definition is called what? Repetition of beginning consonant sounds should be there. Sounds should be there. Now, if you see this example, not naughty, sounds is same, but letters are different. See, here K is the starting letter. Here N is the starting letter, right? Not naughty, but the sound is what? Same. That's why it is what? Alliteration. Cigarette chase. Alphabet is same, but the sound is different. C and Ch. It is not alliterative, right? So if you see repetition of consonant sounds, right, then it is the case of what? Alliteration. No. Assonance. Assonance is what? Assonance means if you talk about the repetition of vowel sounds in between, mean not necessarily at the beginning, in between the words, then it is the case of what? Assonance. But remember, it would be what? It should be vowel sounds, right? And in case of consonant beginning sounds, alliteration is there, right? So C in beat is what? E sound is repeated. History, mystery is what? E, again, E sound is repeated. Now, the next case under the base sound is what? Pun. Now, what is pun? When we use homonyms or homophones in order to create what? In order to create humor, then it is the case of what? Pun. Suppose if I talk about pun, see the example, a happy life depends on a liver. Liver means what? One liver is of body organ and the other liver is what? The person who is living the life, right? So it is what? A pun. So here in this sentence, pun is created by the word liver. Now, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से पढ़िए, प्रीवियस वाली हम लोगों ने डिस्कस की थी. Now the thing is, opposite ideas or contrast is the base. Antithesis. Antithesis means what? When two contradictory things are repeated, or you can say are mentioned in the same sentence, but they are not neighboring. Not neighboring means what? They are not side by side or adjacent, right? There is a gap between them. Even one single word comes between those two, then it would be the case of what? Antithesis, right? And bhi beech mein aa raha hai, so it is what? Antithesis. See the example. मैंने बोला love is an ideal thing and marriage is a real thing. So what could be the opposite words? Opposite words क्या होंगे? Now see, here in this case, the opposite words could be what? Ideal and real, right? Now, if I talk about better to reign in hell than to serve in heaven, so hell and what? Heaven could be the contrasting elements. And there is one more element, reign and serve. It is also opposite, right? Now, patience is bitter, but it has a sweet fruit. Sweet and bitter are the opposite. So if you are getting opposite words, means आपको opposite words मिलते हैं in what kind of thing? Having some sort of gaps, means other words are also there. दूसरे words भी बीच में हैं. Then it is the case of what? It is the case of antithesis, right? Suppose मैंने कहीं पर ऐसे कह दिया hell and heaven,
then also it is the case of what antithesis. बीच में single word आ रहा है तब भी आपका क्या होगा, it is the case of what antithesis. You are easy on eyes, hard on heart. So it is what hard and easy are in the same sentence और दोनों opposite हैं, but not neighboring. बीच में on eyes आया हुआ है, right? Now, so this is what based on contrast or opposite ideas, antithesis. इसी list में, इसी base में, the second literary device is what oxymoron. What is oxymoron? If I talk about oxymoron, contradictory terms appear side by side, means they are what, they are neighboring. अभी तक वो neighboring नहीं था तो क्या था, it was antithesis. Now when it is adjacent or you can say represented side by side, neighboring, then it is what, it is an example of oxymoron. See this example. She is an open secret for me. तो open is what, open is a word और इसका अपोजिट वर्ड क्या है, सीक्रेट, ठीक है, विच इज नॉट रिवील्ड. तो ओपन सीक्रेट अगर एक साथ लगा रहे हो तो इट इज द केस ऑफ व्हाट, ऑक्सीमोरॉन. ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजेडी इज रिलेटेड टू व्हाट, अ नेगेटिव काइंड ऑफ थिंग, सैडनेस. कॉमेडी इज हैप्पीनेस, अपोजिट साइड बाय साइड. तो इट इज द केस ऑफ व्हाट, ऑक्सीमोरॉन. हैविंग नथिंग, हैविंग मतलब है भी मेरे पास, नथिंग मींस कुछ नहीं, तो इट इज व्हाट, ऑक्सीमोरॉन. Wise fool, wise means समझदार, fool means बेवकूफ, right? So this is the case of what, oxymoron. When you put opposite terms side by side, adjacent or neighboring, it is the case of oxymoron. अगर बीच में कुछ और words आ रहे हैं, then it would be the case of what, antithesis, right? Now, the next literary device under the same head is what, paradox. Means अब हम लोग contrast और opposite ideas को पढ़ रहे हैं, means you have to pay attention in this part because these literary devices has been asked so many times, right? Now, if you see paradox means what? Paradox means it is used to display the contradictory things which seems, or you can say which may appear weird or awkward in the sentence, but it is true and it prevails. Means what? It is true also and it is applicable to majority also. So what is the difference between paradox and irony? Let's understand. दोनों में opposite elements होते हैं, ठीक है, but in case of paradox, try to remember, it is what, it is applicable to majority. Means ये थोड़ा सा आपका सत्संग टाइप का होता है. Suppose if I say broad होता है, generic होता है. Now if I say this statement, your enemy's friend is your enemy, ये logic majority पर follow होता है ना. So when it is applicable to majority, it is what, it is the case of paradox. Suppose if I say your enemy's friend, let's say your enemy's friend is your enemy, means what, आपके enemy का जो friend होगा वो आपका भी enemy होगा. Means what, enemy and friend are what, two opposite words, but two opposite words में sentence में single sentence में use तो कर रहा हूँ, but it is giving a what, common thought which is going on in the society. Society में ऐसा चल रहा है, maximum लोगों के साथ ऐसा ही होता है भाई, कि your enemy's friend is your enemy. जो आपके दुश्मन का दोस्त है, that is also your enemy, right? Now I am nobody, मैं कुछ नहीं हूँ, तो मैं हूँ फिर कुछ भी नहीं हूँ, तो it is what, again broad. Means in this context कि man is what, man is nothing, right? Man is mortal in a broader context, right? Now truth is honey which is bitter. Now truth is bitter, ये किसी एक के लिए नहीं, truth in most of the cases it is what, bitter, ठीक है. So many people are there who try to avoid speaking truth. Why? Because it is bitter, it can hurt someone or some people. But बोला क्या है इसको, honey. भाई सच बोलना तो सही है ना. Means telling a lie is bad thing, telling truth is what, it is a good thing. So again generic thought. Now I must be cruel, I must be cruel to be kind to you. Means what, मुझे kind होने के लिए cruel होना पड़ेगा. तो ये हाँ, ऐसा maximum persons करते हैं कि they become strict or tough for other persons for the kindness or for the benefit of the other people, right? Now so this is the case about paradox. तो paradox के लिए एक element बहुत ध्यान रखना, it goes with majority. ये कहीं पर लिख लेना, it goes with minority. कुछ Ketki and Harshit, please mute yourself. Noise आ रही है.
Okay. No. Harshit Singh, yes. Okay. Okay. Now, am I audible? एक बार फिर से सुनो, because paradox is very important. Paradox is that kind of thing in which you will use two contradictory statements in the same statement, but they are true and they are applicable to majority. तो इसमें ये जरूर लिख लेना paradox में, it is applicable to majority of the people, right? ठीक है, तो जितने भी thoughts हैं, quotes हैं, वो अगर opposite way में लिखे गए, means opposite contradictory terms use किए हैं इसमें, तो they are what? They are the example of paradox, right? Now, irony. Irony is what? It is case specific. जैसे paradox is what? Paradox is broad. Irony is what? Case specific. Means, suppose if I say, case specific means ऐसा सबके साथ नहीं होता है. Irony को in Hindi we call it what? We call it in Hindi irony is called any tragedy, or you can say vidambana. Vidambana means what? What you expected you are not getting in reality. Means आपने सोचा कुछ और कुछ ठीक हो गया इसका, जो कि बाकियों के साथ मोस्टली नहीं होता है. Suppose if I say this example, a student was given excellent on getting zero. ठीक है, तो जीरो पर एक्सीलेंट क्या सबके साथ मिलता है? सबको मिलता है? नहीं, किसी किसी को मिला. व्हाई? बिकॉज हाँ, टीचर उसको ऊपर क्या कर रहे हैं? टॉन्ट कर रहे हैं, ह्यूमर करना चाह रहे थे, तो एक्सीलेंट दिया. ही गेव एक्सीलेंट टू दैट स्टूडेंट हु गॉट व्हाट? 0 मार्क्स. ठीक है, तो ऐसा सबके साथ नहीं होगा. बस ये सोच के देखना कि अपोजिट एक्टिविटीज सबके साथ अगर नहीं हो रही है, इट इज मींस इट इज डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. तो दैट इज व्हाट? दैट इज द केस ऑफ व्हाट? Irony. But if it is going with majority, it would be the case of what? It would be the case of paradox. Suppose if I say, how nice, she said when I told her I had to work all weekend. How nice is what? Indirectly negative feel ho raha hai, but the thing is I am saying how nice, right? A traffic cop gets suspended for not paying his parking tickets. Now see the tragedy. Traffic cop himself checks what? Your license, your helmet, right, and all other traffic rules. But उसका खुद का जो है क्या हो गया? चालान हो गया, और you can say he was fined. ठीक है, for not paying the parking tickets. तो ये क्या है? ये सिचुएशनल, या ये किसी पर्सन, किसी ट्रैफिक कॉप के साथ होगा ना, मेजॉरिटी के साथ होगा नहीं. तो ऑलवेज थिंक द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इन अ मैनर that irony is case specific and paradox is broad, right? Contradictory दोनों होंगे. See, the Titanic was said to be unsinkable. Titanic को क्या कहा गया था कि this is what? Unsinkable, but sank on its first voyage. अपनी पहली ही voyage में, अपनी पहली ही यात्रा में क्या हो गई? डूब हो गई. तो ऐसा क्या हर शिप के साथ होता है? मींस जो भी शिप बनाई गई और उसको कहा गया कि इट इज अनसिंकेबल, और वो डूब गई अपनी फर्स्ट वॉयज में भी. ऐसा सबके साथ तो नहीं होता है. टाइटैनिक के साथ हुआ, तो इट इज व्हाट? केस स्पेसिफिक. When the audience knows the killer is hiding in a closet in a scary movie, but the actors do not, right? So it is what? अब आप ये कहो verbal irony, situational irony और dramatic irony, तो ये kinds याद करने की जरूरत नहीं है. You just have to remember one thing: irony is depending on what? Person, depending upon case. ठीक है? That goes not, or you can say that does not follow the majority. Means it cannot be followed over majority, right? Case specific. Paradox goes with what? Majority. This is the main difference. Now the next one is chiasmus. Chiasmus is very simple. First half is reversed in the second half. आप देख भी रहे हो कि you forget what you want to remember and you remember what you want to forget. ठीक? First half, second half में reverse हो गया. That's all, right? Chiasmus. Very easy to pick. Now the next one is what? Epigram. Epigram is a rhetorical device that is memorable, brief, interesting, and surprising. Satirical statement. Now I told you what is satire. Satire means what? Satire. You create humor to others with some sort of expectations. ठीक है? तो satire ऐसा taunt होता है, ऐसा humor होता है in which you expect something from
others. Suppose if I say live simply so that others may simply live, इसमें अगले पर्सन से देखो बहुत स्मार्टली कहा उसने, देखो जरा उसके वर्ड्स देखिए, लिव सिंपली सो दैट अदर्स में सिंपली लिव मींस आप सिंपली रहो जिससे दूसरे लोग भी सिंपली रह सकें, तो जियो और जीने दो, इस काइंड का थॉट है। बट द थिंग इज बहुत स्मार्ट वे में कहा है कि सिंपली सिंपली उसने क्या किया, रिवर्स भी कर लिया और फॉरवर्ड भी कर लिया। बट द थिंग इज व्हाट ही इज गिविंग व्हाट some sort of message and he is expecting from that person that he should live simply। तो अगले से कुछ एक्सपेक्टेशन भी है, ऐसा ह्यूमर या बहुत स्मार्ट वे में इसको कहना, इट इज नोन एज व्हाट एपिग्राम। ठीक है, इट इज नोन एज एपिग्राम। क्लियर? नाउ वर्ड चॉइस और ऑर्डर ऑफ एम्फेसिस। ठीक है, एम्फेसाइज मींस क्या होता है, किसी चीज पर आपने कितना फोकस डाला या उसकी इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी मींस व्हाट, फ्रीक्वेंसी मींस कितना इंटेंस है, कितना इफेक्ट करता है, राइट? नाउ सी द फर्स्ट वन इन दिस लिस्ट इज व्हाट हाइपरबोली। हाइपरबोली इज व्हिच काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस? हाइपरबोली मींस व्हाट यू एग्जैजरेट वन थिंग एंड वो हुआ बहुत स्मॉल था, मींस व्हाट, सपोज इफ यू सी द examples are like this, I have told you to stop 1,000 times। अब क्या 1,000 टाइम्स किसी ने कहा होगा? 1,000 बहुत ज्यादा होता है अगर आप किसी स्टेटमेंट को बोलो तो, बट हाँ मैंने इसको हाइप कर दिया, इसको एग्जैजरेट कर दिया कि मैंने तुमसे 100 टाइम्स 1,000 टाइम बोला है कि ये मत क्या करो, डू नॉट रिपीट दिस। तो क्या है? इट इज व्हाट एन एग्जांपल ऑफ हाइपरबोली। दैट मस्ट हैव कॉस्ट $1 billion। $1 billion बहुत ज्यादा होते हैं, बट मैंने नॉर्मली कोई चीज ऐसी है जो कि अनअफोर्डेबल है तो उसके लिए मैंने ये टर्म यूज कर दिया एग्जैजरेट करने के लिए। आई कुड डू दिस फॉरएवर, फॉरएवर हमेशा के लिए। ठीक है, शी इज ओल्डर देन डर्ट। ओल्डर देन डर्ट मतलब क्या है, आपने डर्ट से भी उसको ओल्ड बता दिया, तो ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मींस हाँ अगले को हर्ट तो फील होगा ही, बट द थिंग इज व्हाट एग्जैजरेशन है यहाँ पर, आपने कुछ ज्यादा ही एक्सेसिव डिग्री यूज कर दी। एवरीबॉडी नोज दैट, सभी को पता है। ठीक है, तो इट इज व्हाट हाइपरबोली। इट इज वेरी इजी टू पिक। इसका अपोजिट ध्यान रखना, दैट इज व्हाट अंडरस्टेटमेंट। Understatement means what? When you express, or you can say express something as less severe or less important। ठीक है, means hyperbole में आप small thing को बहुत बड़ा करके बताते हो, but in understatement आप big thing को भी बहुत छोटा करके बताते हो। See the example, it's just a scratch referring to a large dent। आपकी कार में बहुत बड़ा डेंट लग गया है, बट अगले पर्सन आप कहना it's just a scratch, तो क्या है, आप दिखा रहे हो कि कुछ नहीं हुआ, बट इट इज व्हाट, इट इज हाई इन इंटेंसिटी, राइट? इंटेंसिटी में ज्यादा है। इट्स अ लिटिल ड्राई एंड सैंडी, रेफरिंग टू द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ड्राइएस्ट डेजर्ट में आप बैठे हुए हैं या वहां पर हैं और आप कह रहे हैं इट इज लिटिल ड्राई। ठीक है, द वेदर इज कूलर टुडे, वेदर इज कूलर टुडे, सब जीरो टेम्परेचर्स में आप बोल रहे हैं वेदर इज कूलर, वहां बोलते वक्त भी शायद आप जम जाए, राइट? इट वाज इंटरेस्टिंग, रेफरिंग टू अ बैड और डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। इट स्टिंग्स अ बिट, रेफरिंग टू अ सीरियस वुड और इंजरी। आपको बहुत बड़ी चोट लगी और कह रहे हैं कुछ चुभ रहा है, कुछ चुभ रहा है, राइट? राइट, समबडी इज व्हाट स्टैबिंग ऑन यू, तो क्या हो रहा है? कह रहे हैं कुछ चुभ रहा है, कुछ चुभ रहा है। तो दिस इज व्हाट यू आर गिविंग एन एग्जांपल ऑफ अंडरस्टेटमेंट, राइट? ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज लाइटोटिस। ध्यान से सुनना, लाइटोटिस इसका भी एक अपोजिट है। Litotis is what? When you represent affirmative with negative। इसके लिए एक लाइन ही लिखो, ठीक है? When you represent, write down, when affirmative means what? Positive things, and when affirmative is represented with negative expression से आप कोई पॉजिटिव चीज बोलेंगे तो that would be the case of litotis। See the example, मैंने बोला the ice cream was not too bad। the ice cream was not too bad means अगर आइसक्रीम बैड नहीं थी तो what does it mean? it was good, यही तो मीनिंग निकला। ठीक है, If I say New York is not an ordinary city, अगर ये ordinary city नहीं है तो ये special city है, right? तो ordinary negative और not negative, two negative मिलके क्या होता है? Positive, right? Your comments on politics are not useless। Not useless means what? It is
useful, right? Now you are not as young as you used to be, so it is what? तो तुम जैसे रहते थे एज एन, मतलब जितने छोटे दिखते थे वैसे उतने छोटे हो नहीं, मीन्स व्हाट? ही इज प्रेजिंग बट यूजिंग व्हाट? द नेगेटिव वर्ड्स. तो व्हेन यू से पॉजिटिव थिंग्स थ्रू नेगेटिव वर्ड्स, इट इज व्हाट? इट इज द केस ऑफ लाइटोटिस, राइट? इसी का अपोजिट होता है यूफेमिज्म. इट इज कॉल्ड व्हाट? यूफेमिज्म, द अपोजिट ऑफ लाइटोटिस. इसमें क्या करते हैं हम? नेगेटिव एलिमेंट और ऐसी सिचुएशन जिसको हम अगर डायरेक्टली बोलते हैं तो इट बिकम्स वियर्ड, उसको हम पॉजिटिव से बताते हैं. तो व्हेन नेगेटिव इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? Affirmative. So it is the case of euphemism. See, the substitution of an offensive term for one considered offensively explicit. Now see, example, going to the other side. जैसे आप death बोल दो तो it is what? It is very bad word. But अगर मैं कहता हूँ going to other side, passed away, senior citizen for old people, तो this is example of what? Euphemism. ठीक है? तो कोई negative element direct ना बोल के आप दूसरे words use करो जिससे अगले को बुरा ना लगे, तो it is what? Euphemism. और पॉजिटिव एलिमेंट्स को इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग विद नेगेटिव वर्ड्स देन इट इज व्हाट? लाइटोटिस. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? एनाफोरा. एनाफोरा इज व्हाट? व्हेन बिगिनिंग वर्ड इज रिपीटेड. बिगिनिंग वर्ड, एलिटरेशन में क्या था? बिगिनिंग लेटर था, बिगिनिंग वर्ड इज रिपीटेड, इट इज द केस ऑफ व्हाट? एनाफोरा. ठीक है? आई केम, आई सॉ, आई इज अ वर्ड आल्सो. ठीक है? मैड वर्ल्ड, मैड किंग्स, उसमें क्या है? रिपीटेशन ऑफ बिगिनिंग वर्ड हो रहा है, एनाफोरा. ठीक है? Rhetorical question. Rhetorical question is what? It is that kind of question in which you don't have to give any kind of answer. Means those question elements which does not require any answer, right? जैसे देखो, does money grow on trees? तो आपको कोई रिप्लाई देना है क्या? No. ठीक है? तो rhetorical question is what? It is an expression or you can say feeling, ठीक है, in which the other person does not give any answer or answer is not expected also, right? Now if I say the next one, epistrophe. epistrophe क्या है? जैसे anaphora क्या था? anaphora repetition of beginning word था. ये क्या है? successive clause का ending word अगर repeat होता है तो it is the case of what? epistrophe. The repetition of a word at the end of a successive clause or sentences. तो जहां जहां sentence में pause होते हैं, elements separated by comma, उन एलिमेंट्स में अगर रिपीटिशन चल रहा है तो इट इज व्हाट? इट इज द केस ऑफ एपिस्ट्रफी, राइट? नाउ कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन मींस व्हाट? क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स समझिए क्या होता है? हैव यू हर्ड दिस स्टेटमेंट क्लाइमैक्स? मूवी का क्लाइमैक्स क्या होता है? क्लाइमैक्स मींस व्हाट? व्हेन ऑल द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आर व्हाट? आर व्हाट? अरेंज्ड इन अ फॉर्मेट और यू कैन से आर यूनाइटेड. सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स लास्ट में आ जाते हैं ना मूवी के, विलेन, हीरो, सब, राइट? तो इट इज व्हाट? तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है? दैट इज हीरो. तो क्लाइमैक्स मींस व्हाट? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो बाद में दी होती है. कहां दी होती है? इन द लास्ट पोर्शन. सी दिस, सी द एग्जांपल. कह रहा है ना, इसको भी तो पढ़ लो. रिफर्स टू अ फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस आर अरेंज्ड इन अ ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस. तो जितनी इंपॉर्टेंस जिसकी होगी उतना वो आगे वर्ड लिखा होगा, राइट? सी दिस, देयर आर थ्री थिंग्स. सी दिस, देयर आर थ्री थिंग्स दैट विल एंड्योर: फेथ, होप एंड लव. ठीक है? अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑथर के लिए होगा ना, उसको वो लास्ट में रखेगा. सी दिस, बट द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज इज लव. तो ग्रेटेस्ट ऑफ दीज इज लव. तो लव कहां लिखा हुआ है? लास्ट, राइट? तो इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज क्लाइमैक्स. एंटी क्लाइमैक्स इज द अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स. मींस व्हाट? यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होगी वो पहले लिखी होगी, लास्ट में नहीं. सी दिस, शी इज अ ग्रेट राइटर. अ ग्रेट राइटर इज व्हाट? इट इज हाईली इंपॉर्टेंट. भाई राइटर होना इज नॉट एन इजी टास्क, ठीक है? बट इसके बाद मैं कह रहा हूं मदर. तो हाँ, मदर तो मेजोरिटी में कोई पर्सन बन सकता है, राइट? उसके बाद एंड अ गुड ह्यूमरिस्ट. हाँ, ह्यूमर भी कर सकते हैं. बट इन तीनों को कंपेयर करके अकॉर्डिंग टू ऑथर व्हिच इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट टू बिकम अ राइटर और टू बी अ राइटर. क्लियर? तो क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स मींस व्हाट? जो हाईएस्ट इंटरेस्ट या हाईएस्ट इंपॉर्टेंस की थिंग होगी वो लास्ट में मेंशन होगी, लेटर पोर्शन. एंड इफ यू सी अबाउट एंटी क्लाइमैक्स वुड बी मेंशन्ड इन अ अपोजिट वे.
the most important thing would be in the former position, right? ठीक है. Now some other figure of speech are there. Epithet. Epithet means what? Your nickname. ठीक है, nickname. Allegory. Allegory is what? Representation of abstract ideas or principles by concrete or material forms. ठीक है. So if I say abstract ideas by what? The tortoise and hare, slow and steady wins the race. तो जो जिससे स्टोरी अटैच होती है, राइट? ठीक है, उससे. नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस. पहले क्वेश्चंस देखते हैं, राइट? बाकी पढ़ेंगे, बट लेट्स सी सम क्वेश्चंस. दीज आर द पोएट्रीज. इनमें भी आप लिटरेरी डिवाइस यूज कर सकते हो, राइट? ठीक है, बट सी द एक्सरसाइज फर्स्ट. ठीक है. नाउ if you see the first sentence, out in the porch sagging floor, leaves got up in a coil and hissed, blindly struck at my knee and missed. Can you answer this question? What could be the answer? Metaphor, irony, simile, hyperbole. See, one thing is most important for you. Always think about literary devices within the given answer choices. जितनी choice दी है सिर्फ उसी रेंज में सोचना, बहुत broad या wide मत सोचना, confuse हो जाओगे, right? Now, तो your options are what? Metaphor, irony, simile या hyperbole. इसमें से कोई एक ही हो सकता है. Tell me. Sagging means what? Bend down. तो ये क्या कह रहा है कि out in the post sagging floor, leaves got up in a coil. Leaves जो है उस पर क्या है? In a coil format, वो उसको लपेट लिया and hissed is the quality of what? Snake. But यहाँ पर leaves के लिए वो बता रहा है, right? Blindly struck at my knee and missed means what? इसमें traits किसके हैं? मीन्स अगर मैं तुमसे बोलूं तो लीव्स के जो एक्टिविटी हैं उसको किससे कंपेयर किया है? हिस्ड मीन्स स्नेक की क्वालिटीज से, स्नेक की एक्टिविटी से. वेरी गुड गौरी. इट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? मेटाफर. मेटाफर इज द राइट आंसर. व्हाई? बिकॉज लीव्स आर कंपेयर्ड विद स्नेक, द एक्टिविटीज ऑफ स्नेक. हिस्ड किसका वर्क होता है? हिस्ड मीन्स इट इज अ साउंड क्रिएटेड बाय व्हाट? स्नेक. ठीक है, तो मेटाफर इज द राइट आंसर. वेरी गुड गौरी, वेरी गुड केतकी, वेरी गुड. नाउ द सेकंड वन. जॉर्ज बुश टॉक ड्यूरिंग हिज campaign about compassionate conservatism, which to many liberals sounds like synecdoche, oxymoron, euphemism and apostrophe. You know all these options. Synecdoche क्या था? A small part is represented with what? Represents the whole thing. Oxymoron, two opposite things side by side. Euphemism, to represent what? Negative with positive. And apostrophe, to communicate with the non-living things. Oxymoron. Yes, very good, Gauri. How it is oxymoron? Where you can see the oxymoron kind of thing? Compassionate conservatism. Compassionate means क्या होता है? Can you tell me compassionate? Compassionate means a kind person. A kind person. Yes, kind person. Very good. And if I talk about conservatism, conservatism means what? Having traditional ideas, having old thoughts. तो जो कंजर्वेटिज्म को फॉलो करता है, ट्रेडिशनल होता है, he often becomes what? Rigid on his thoughts. वो रिजिड हो जाता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता. बट वन हु इज काइंड, he might be flexible. काइंड होगा तो वो अदर की जो इंटरेस्ट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकता है. तो वन हु कैन बी चेंज्ड इज व्हाट? कंपैशनेट. एंड वन हु कैन नॉट बी चेंज्ड इज व्हाट? कंजर्वेटिज्म. तो अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज व्हाट? The correct answer of second question is what? It is oxymoron. The first one is what? Metaphor. Clear? Now, see the next one. Necessity is the mother of invention. Can you tell me the literary devices? Necessity is the mother of invention. Anyone? Necessity is the mother of invention. Anyone who wants to answer? Okay. Very good, Ketki. Very good, Gauri. Right? Personification. Kurangi. D is which option? Paradox. How, Kurangi? It is paradox. A. Dipesh is saying personification. Okay.
पैराडॉक्स कैसे है ये करूंगी? हाउ इज इट पैराडॉक्स? देखो पैराडॉक्स में मैंने क्या बताया था, ध्यान से सुनिएगा। पैराडॉक्स मींस व्हाट? टू अपोजिट थिंग्स। टू अपोजिट थिंग्स दिख रहे हैं इसमें? टू अपोजिट थिंग्स दिख रहे हैं? कोई अपोजिट वर्ड्स भी दिख रहे हैं? नो, दैट्स व्हाई पैराडॉक्स इज नॉट द आंसर। ठीक है, इट इज सेइंग नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी जो कि नॉन ह्यूमन है, उसको एज अ मदर बता रहा है, उसको एज अ मदर बता रहा है। मदर इज व्हाट? इट इज अ ट्रेट ऑफ व्हाट? ह्यूमंस। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज द केस ऑफ व्हाट? इट इज द क्लियर कट केस ऑफ पर्सोनिफिकेशन, दिस वन, राइट? नाउ इफ यू सी द फोर्थ वन, the poor people of Ireland should rid themselves of poverty by selling their children to the rich to eat. What could be the answer of fourth? Poor person. What could be the answer? Poor people of the island should rid themselves to poverty by selling their children to rich to eat. Yes, very good question. It is ironical case. ऐसा सबके साथ नहीं होगा भाई। आप रिच पर्सन्स को अपने बच्चे दे देंगे so that you can remove your poverty? No, it is case specific. When it is case specific, it is what? It is irony. It cannot be paradox, right? ठीक है, now if you talk about fifth one, the phrase is, so the answer of fourth question is what? It is irony. Fifth, the phrases, the humming bee, the cackling hen, and the buzzing saw. The buzzing, humming, and cackling is what? Example of what? Personification, onomatopoeia, metonymy, spoonerism. Okay, Gauri, I will tell you what is neologism and Lagaria. ठीक है, पहले इसका आंसर बताओ। Personification, onomatopoeia, metonymy और spoonerism. Onomatopoeia, very good, Gauri. Sounds, name of what? Name of sounds is known as what? जैसे humming, cackling और buzzing, ये क्या है? These are the name of sounds. तो the correct answer is what? Onomatopoeia. Spoonerism क्या होता है? लिख लो spoonerism. Spoonerism is what? Can you guess? चलो, जितने भी ऑप्शन ऐसे हैं जिनके आपको नहीं आ रहे हैं, राइट डाउन। तो फर्स्ट वन इज व्हाट? नियोलॉजिज्म. नियोलॉजिज्म इज व्हिच काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइस? राइट डाउन. Right on. When we use a new word for the familiar term, when we use a new word, neo means new. When we use a new term for the familiar term, it is what? It is known as what? Neologism. Neologism means what? A new word, using a new word. ठीक है, can you give the example? Suppose if I say blogosphere. Blogosphere means what? The age of blogs. So it is what? Neologism. मैंने एक नया टर्म ही दे दिया भाई. Sphere is circle or area, blog is another thing. तो मैंने उसको मिलाकर एक नया वर्ड बना दिया. So it is called what? Neologism. Next word is what? Logoria. Logoria is what? Write down. अभी इसमें भी था ये, right? When you try to talk too much about anything, when you try to talk too much about anything, extreme talk about anything, किसी चीज के बारे में बहुत डिटेल्ड एक्सप्रेशंस हैं, राइट? इट इज व्हाट? लोगोरिया. ठीक है, मींस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में बेसिकली ये डोमिनेंट होता है, ये लिटरेरी डिवाइस, राइट? लोगोरिया. ठीक है. व्हेन यू आर व्हाट? एक्सट्रीम वर्बोज एक टर्म यूज करते हैं कि बहुत ज्यादा आपने वर्ड्स यूज कर दिए हैं फॉर द सेम मीनिंग, राइट? Now the next one is what?
स्पूनरिज्म, राइट डाउन स्पूनरिज्म। कि जितने भी लिटरेरी वर्ड्स आप पढ़ते जा रहे हो उसको कभी ना भूलना, राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट डाउन spoonerism is a verbal error. Spoonerism is a verbal error. Verbal error means what? जैसे आप बोलते हो ना स्लिप ऑफ टंग हो गया, ठीक है, बोलना कुछ चाह रहे थे और क्या है आपके मुंह से निकल कुछ गया, तो इट इज व्हाट, इट इज द केस ऑफ व्हाट, स्पूनरिज्म। ठीक है, ठीक है, तो बाय एक्सीडेंट आप कुछ कहना चाह रहे थे, हो गया कुछ और, तो इट इज व्हाट, कुछ और ही बोल गए, तो इट इज व्हाट, इट इज द केस ऑफ व्हाट, जैसे मुझे कहना है टन्स ऑफ सॉइल, ठीक है, आपके मुंह से जल्दी जल्दी में क्या निकल गया, सन्स ऑफ टॉयल, इट इज व्हाट, सन्स ऑफ टॉयल। तो ये क्या, इट इज द केस ऑफ व्हाट, स्पूनरिज्म। स्लिप ऑफ टंग लिख लो, ज्यादा याद रहेगा, वर्बल एरर से भी अच्छा। स्लिप ऑफ टंग, जैसे आपने कुछ बोलना कुछ था, बोल कुछ दिया, तो इट इज व्हाट, स्पूनरिज्म। नेक्स्ट इज, नोट कर लिया सबको, जस्ट नोट डाउन, एग्जाम्पल भी नोट कर लेना स्पूनरिज्म का, राइट। Next is number 6. How many times have I told you to clean your room? What could be the answer? Hyperbole, rhetorical question, oxymoron और eponymy. Eponymy क्या होता है ना, किसी पर्सन का नाम किसी प्लेस के लिए यूज कर दे, जैसे महात्मा गांधी मार्ग, इस तरह से, राइट। ठीक है। How many times have I told you to clean your room? Yes, it is the case of what, rhetorical question, means इसमें आपको आंसर नहीं देना है। Why? It doesn't require any answer. So it is what, rhetorical question. It is rhetorical question, right? Now the 7th one. To err is human, to forgive divine. To err is human, to forgive divine. It is what? Antithesis. Very good, Ketiki. Which where is opposite word? The two opposite words are, जैसे antithesis में क्या होता है, two opposite words आते हैं in a single statement. मुझे बताओ two opposite words कौन कौन से हैं? Err and forgive. Yes, very good. ठीक है, और आप ये भी ले सकते हो human and divine. Human and divine. Here divine means what? Related to God. Human क्या है? Means human cannot be 100% correct, but divine or divinity or God is 100% correct, right? ठीक है। Now, so it is the case of what, antithesis. Now, my uncle passed away in 1970. Tautology, exclamation, euphemism or apostrophe. My uncle passed away. अब passed away कब यूज किया जाता है? Passed away is used in which expression? If you remember, मैंने आपको लाइटोटिस और उसका अपोजिट यूफेमिज्म लिखवाया था, if you remember, right? What is लाइटोटिस? In लाइटोटिस we use what? We represent positive things with negative elements, negative words. But in euphemism we do the opposite kind of thing. Means passed away हमने इसलिए बोला क्योंकि death is very negative word. ठीक है, so it is what? It is the case of what? Euphemism. ठीक है। Write down the meaning of tautology. Tautology. The repetition of the same word twice in a single sentence. The repetition of same word twice in a single sentence. ठीक है, मतलब आप repetition of वर्ड्स को 2 times रिपीट करो या एक ही मीनिंग के लिए 2 वर्ड्स यूज कर दो,
मीन्स नीडलेस रिपीटिशन ऑफ ए स्टेटमेंट, उसको क्या बोलते हैं? टोटोलॉजी, राइट। जैसे मैं कहूं a beginner who has just started, a beginner who has just started, तो आप just started क्यों बोल रहे हो? बिगिनर इटसेल्फ डिफाइन नहीं कर रहा है, तो आपने एक ही मीनिंग को बताने के लिए टू टाइम्स या 3 टाइम्स वर्ड्स यूज कर दिए, तो इट इज व्हाट, इट इज द केस ऑफ व्हाट, टोटोलॉजी, रिपीटेशन ऑफ words for the same meaning, for the same meaning. The repetition of different words for the same meaning. Now, number 9. When Detroit increased auto production recently, Wall Street applauded and the White House took credit. White House took credit. Tell me the literary device. Question number 9. क्या होगा? Yes, very good. Metonymy. मैंने बोला था ना, I like to read Shakespeare. So Shakespeare is a different thing and his plays are different. The White House is different thing or President of US is different thing. But associate कर सकता हूं मैं. It is the case of what? Metonymy. ठीक है? Metonymy. Now, write down the meaning of what? Cis-pediculain. Cis-cupidalian. Write down. Using long words, very long words. Very long words. Very long words means not, कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग भी बहुत टिपिकल होती है और वो बहुत ही लॉन्ग वर्ड्स होते हैं, खत्म ही नहीं होते हैं, तो उनको बोलते हैं क्या? लॉन्ग वर्ड्स, यूजिंग लॉन्ग वर्ड्स. तो यूजिंग लॉन्ग वर्ड्स इज द डेफिनेशन ऑफ दिस सिस क्यूपिडेलियन, राइट? एपोनिमी मैंने आपको अभी बताया था. व्हाट इज एपोनिमी? एनीबॉडी? एपोनिमी. If any person's name is given to a thing or a place, ठीक है, किसी पर्सन के नेम पर कोई चीज पड़ जाए, नेम, तो इट इज व्हाट? एपोनिमी. Now the next thing is what? My ranker uncle bought 50 head of cattle last week. Now what? I'm giving you a clue. 50 head of cattle. 50 head. 50 head. What could be the answer? 50 head of cattle last week. Synecdoche. Very good. Very good. 50 head means what? Small part represents the whole thing. तो cattle को represent कर रहा है क्या? Head. ठीक है, तो it is what? The case of synecdoche. ठीक है. Now, my son's teacher made it clear that cheating on tests was no laughing matter. No laughing matter. तो क्या होगा? It is what? What is the example? Sorry, what is the answer? My son's teacher made it clear that cheating on test was no laughing matter. मतलब cheating is a negative thing और no laughing matter, no भी लगा दिया तो it is what? Negative is what? Positive. Litotes. Very good. It is the case of what? Litotes. Now, hail divinest melancholy, whose saintly visage is too bright to hit the sense of human sight. Hail divinest. बात कर रहे हैं किससे? Non-human से. So it is what? Apostrophe. Yes, very good. When you address any non-human kind of thing, so it would be what? Apostrophe. Now the 13th one. I am so hungry, I could eat a horse. मैं इतना भूखा हूं कि क्या? I can eat a horse. कुछ ज्यादा exaggeration चल रहा है. So what could be the case? It could be the case of what? Hyperbole, right? Hyperbole. Concise means होता है what? If one thing is more emphasized, किसी को बहुत कुछ ज्यादा emphasis करते हैं, जैसे conceited person होते हैं तो self-centered होते हैं, self-obsessed होते हैं, ठीक है? In that manner. Now the next is now, which is the special form of an antithesis? Pun,
climax, metonymy, or oxymoron? Which is the special form of what? Which is a special form of antithesis? एंटीथीसिस का स्पेशल फॉर्म क्या है? मींस एंटीथीसिस के मैंने साथ आपको क्या पढ़ाया था, जरा बताओ. ऑक्सीमोरॉन. व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि इन एंटीथीसिस अपोजिट टर्म्स साइड बाय साइड नहीं होंगे, बीच में दूसरे वर्ड्स होंगे. बट इन ऑक्सीमोरॉन दे विल अपीयर व्हाट? नेबरिंग, मींस साइड बाय साइड. वेरी गुड. व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरोगेशन? इंटरोगेशन इज व्हाट? Asking questions for sake of getting answers, या a strong expression, या proper word to another. Very simple question. A. Interrogation is what? The process of what? Asking questions. ठीक है. Or basically this term is used in case of what? Investigation. Yes. A is the right answer. Next is Christianity shone like a beacon in the black night of paganism. What figure of speech is Christianity shone like a beacon? Like a beacon. Like a beacon. Yes, very good. Simile. In Crown Hill Cemetery in Indianapolis are buried President Benjamin Harrison, 3 vice presidents, 15 senators and governors, and John Dillinger. Climax, metaphor, conceit or anticlimax? मुझे बताओ, यहाँ पर पोस्ट डिस्क्राइब की गई ना कि वहां पर सिमेट्री में कौन कौन थे. ठीक है. तो सिमेट्री में सबसे ज्यादा मींस क्लाइमैक्स इज व्हाट? व्हेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिप्रेजेंटेड एट द लेटर पोर्शन, एंड एंटी क्लाइमैक्स इज द अपोजिट ऑफ दैट. व्हेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? इज प्लेस्ड एट द फॉर्मर पोजीशन. तो यहाँ पर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन क्या है अमंग दीज? भाई देखो, वीपी की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट, तो वो प्रेसिडेंट से छोटा ही होगा, राइट. सेनेटर्स उससे छोटे, गवर्नर्स उससे छोटे, तो सबसे बड़ा क्या हुआ? प्रेसिडेंट. तो सबसे पहले मैंने सबसे ज्यादा इंटेंस वर्ड को यूज किया है, तो इट इज द केस ऑफ एंटी क्लाइमैक्स. वेरी गुड. एंटी क्लाइमैक्स इज द राइट आंसर, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन. नाउ see some more literary devices. लोगों ने कौन सा पढ़ा था? ये तो कॉन्सोनेंस. राइट डाउन कॉन्सोनेंस. कॉन्सोनेंस को वहां लिखो जहां आपने असोनेंस लिखा था, राइट. वेयर यू हैव रिटन असोनेंस, कॉन्सोनेंस शुड बी रिटन देयर. कॉन्सोनेंस इज व्हाट? ध्यान से सुनना, क्योंकि एलिटरेशन से कंफ्यूज होते हैं कई लोग. कॉन्सोनेंस इज व्हिच काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच consonant sound is repeated, in which consonant sound is repeated. Write down. Consonant sound is repeated, but not at the beginning. Not at the beginning. Beginning में consonant sound repeat होगा तो वो alliteration है, वो consonance नहीं होगा. This is the main difference between alliteration and consonance. Clear? ठीक है, तो लिख लेना. Not necessarily at the beginning part. ठीक है भाई. अगर vowel sounds repeat हो रहे हैं in between the words or sentences, then it is the case of assonance. इसी का opposite है consonance, right? No. तो consonance clear. ठीक है. Next is transferred epithet. Write down. Transferred epithet. ठीक है. It is what? Transferred epithet means what? Transferred what? Transferred quality, transferred intensity, transferred emphasis. Means what? See the example. I had a wonderful day. Means what? Wonderful is being transferred to that person's day. ठीक है. Now what? See this. The day is not in itself wonderful. Day is not in itself wonderful. It is wonderful for that speaker. That speaker. ठीक है. तो epithet means adjective is what? Transferred or attached to a special thing or person. That is known as what? Transferred epithet. ठीक है. तो means what? How do you feel? देखो literary device क्या होती है? आपके expressions और feeling को discuss करती है, express करती है. तो in case of transferred epithet, जब किसी एक adjective को किसी एक पर associate किया जाएगा, किसी एक पर focus किया जाएगा, relate किया जाएगा, तो that would be what? Transferred epithet. और इसमें basically
जिसका ट्रांसफर होता है वो एडजेक्टिव होता है. क्या होता है वो? एडजेक्टिव, राइट? नाउ circumlocution, write down circumlocution. This consists of expressing some fact or idea in a roundabout way instead of stating it at once. ठीक है? The viewless couriers of the air means what? If I say, when we say anything in an indirect manner, it is the case of what? Circumlocution. घुमा फिरा कर बात करना. ठीक है? तो it is what? मैंने बोला कि द स्टेटमेंट ऑफ हिज वॉज प्योरली एन एफर्ट ऑफ इमेजिनेशन. तो मैंने डायरेक्ट नहीं बोला कि फिक्शन, प्योरली एन एफर्ट ऑफ इमेजिनेशन. इट इज व्हाट? इट इज गिविंग द सेंस ऑफ फिक्शन, बट ये फीलिंग्स में है. और इसी को मैं पर्सन्स में बोल दूं तो मेटोनिमी हो जाता था, राइट? तो इसको ध्यान से देखना, एग्जांपल्स जरूर नोट कर लो. द व्यूलेस क्यूरियर्स ऑफ द एयर, राइट? द विंड. टॉटोलॉजी मैंने आपको बताया क्या है? रिपीटिंग द सेम फैक्ट ट्वाइस और थ्राइस मींस एक ही वर्ड के एक ही मीनिंग के लिए हम कई वर्ड यूज करते हैं. द अदर वर्ड फॉर टॉटोलॉजी इज व्हाट? प्लियोनेज्म. प्लियोनेज्म, राइट डाउन. प्लियोनेज्म और स्लैश और ऑब्लिक टोटोलॉजी. टोटोलॉजी, राइट? ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज concite. Write down concite, in which two vastly different objects are likened together with the help of similes and metaphors. Means what? मैंने बोला था focused. So see this example. The broken heart is a damaged china pot. तो मैंने broken heart को किसकी तरह बता दिया? Damaged china pot. लेकिन ये बहुत ही बड़ा स्मार्ट वे होना चाहिए. जैसे आप कहोगे सर फिर मेटाफर क्या होता है? मेटाफर हम इतनी स्मार्टनेस नहीं दिखाते हैं. हमने बोला लाइफ इज अ ड्रीम, तो ड्रीम भी बहुत कॉमन वर्ड है और आपका क्या है, लाइफ भी बहुत कॉमन वर्ड है. तो उसमें मैंने डायरेक्टली लाइफ को किससे कनेक्ट कर दिया? ड्रीम से. बट यहाँ पर क्या है, तुम्हें एक न्यू वर्ड मिलेगा, ऑर्नामेंटल वर्ड्स मिलेंगे. तो कहीं पर लिख लेना, यूजिंग ऑर्नामेंटल वर्ड्स इज ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ कंसाइट. मैंने चाइना पॉट बोला, मतलब द ब्रोकन हार्ट इज लाइक अ डैमेज्ड चाइना पॉट. चाइना पॉट का जो इन्फ्लुएंस है वो क्या है? Can you tell me the influence of China pot? उसने China pot ही क्यों बोला? Anyone? Yes, very good. Fragile. It is what? Easily broken. Easily broken. It is giving the sense of easily broken. तो मैंने क्या बोला? मैंने fancy words use किए. तो when I am using fancy words in the sense of metaphor, तो it is concise. ठीक है. Next is what? Enjambment. Enjambment बहुत common है, आपने school days में भी किया होगा. Means अगर आप when you see any lines of poetry or prose, ठीक है, suppose one line ends here, ठीक है, second line भी आ गई, third line भी आ गई और इसमें कोई भी punctuation marks नहीं है, comma भी नहीं है, colon भी नहीं है, कुछ नहीं है. ठीक है. तो when we are getting 2 to 3 lines or the whole stanza without any punctuation marks, it is the case of what? Enjambment. It is continuous. Enjambment. It is what? It is continuous. Right? Note कर लो इसको. ठीक है. Means there is a continuation of sentence without any punctuation marks, without any pause. तो कोई pause ना हो. Continuity में 2 to 3 statements चलते चले जाएं. तो it is what? It is the case of enjambment. ठीक है. Now एक बार सबको revise कर लेना. Right? And it is important also. In paragraphs also it is coming. तो when I will discuss the RC sessions, तो उसमें कुछ elements, कुछ questions किसके होंगे? Literary device के भी होंगे. तो try to cope up with this, right? Try to recall the literary devices on the basis of the bases which I described you, or you can say which I discussed in the 3 classes, right? Till then, thank you so much. Bye bye.